हेनरी सेसल इंग्लिस्तान का वो जज था, काउंटी कोर्ट जज, जो कि बड़े ज़बरदस्त नावल लिखा करता था। अगर लॉ में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, या अगर नावल पढ़ने का वैसे भी शौक है, या अपनी अंग्रेज़ी करनी है, तो ये छोटे छोटे नावल हेनरी सेसल के लिखे हुए, एलिबाई फॉर अ जज, अ वुमन नेम्ड एन, नो बेल फॉर द जज, brothers in law, ways and means, brief tales from the bench, अनलॉफुल ओकेजन्स, बेशुमार ही आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे डाउनलोड के लिए, इलीगल हैं। मगर ये जो तस्वीरें हैं ये इंडिया से रूपा कंपनी है वो छापती है। इंडिया से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वालिद साहब की कलेक्शन के अंदर, और मैं भी संडे बाज़ार के अंदर से यूज़ किताबों में से उठाता रहा हूँ। पेंगुइन वालों ने, या आपको इस ऑरेंज रंग की बड़ी किताबें आपको बेशुमार मार्केट में यूज़ मिल जाएंगी, वो उठाइए। हेनरी सेसिल की मेरी पसंदीदा जो किताब है, तकरीबन सारे इनके नावल्स मैंने पढ़े। देर ऑलमोस्ट फ़नी बट नॉट रियली फ़नी, बट बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। वकालत और वकीलों की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। और एक इसकी तो फिल्म भी बनी थी, ब्रदर्स इन लॉ। रॉजर थर्सबी के नाम से एक कैरेक्टर इसने क्रिएट किया हुआ, यंग वकील जो कि वकालत के अंदर आता है, और वो क्या उसके क्या मामलात वगैरह होते हैं, किस तरीके से शादी भी होती है, और ये काम भी कैसे जगल करना होता है। शादी इसके दौरान ही मेरे ख्याल में होती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एट कोर्ट, और जब थोड़ा सा सीनियर हो जाता है तो उसके बाद जो रॉजर थर्सबी, वो इसी कैरेक्टर की का नावल है, सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट। एक और है जिसके अंदर ये बहुत सक्सेसफुल प्ले भी हुआ करता था, इसको स्टेज का प्ले इंग्लैंड के अंदर जो चलता है, जिसके अंदर आई डू बिलीव के जजेस विटनेसेस सारों को किडनैप करके वहाँ पे एक मुकदमा आउटसाइड ऑफ कोर्ट ये सेटल किया जाता है। इसके साथ साथ ब्रदर्स इन लॉ तो आपको मैंने बताई, इसके साथ साथ एक डॉटर्स इन लॉ भी फिर उसके बाद किताब आई थी, जिसके अंदर एक बंदा जिसको वकील बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसके दोनों बेटों की, एक जज साहब की दो ट्विन बेटियों के साथ इसको कहते हैं शादी की होती है, और उसके बारे में सारा, एक बेटी सोलिसिटर होती है, एक बेटी बैरिस्टर होती है। तो जो सिचुएशंस हैं थोड़ी सी फ़नी वगैरह करते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंजीनियसली रिटन, और ज़्यादा मोटी नहीं है, छोटी छोटी किताबें। तो अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके सामने तमाम दोस्तों से एक केस के अंदर कि जी ये ब्रदर्स इन लॉ में रॉजर थर्सबी का कैरेक्टर है, उसको अपने वो सीनियर के साथ कोर्ट में जाता है, तो सीनियर के मुख्तलिफ कोर्ट जजेस के सामने केसेस लगे होते हैं, तो उसको फ़ाइल पकड़ा के सीनियर सब बीच में करते करते उसको फ़ाइल के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, और उसको वहाँ पे पकड़ा के छोड़ जाता है। तो उसके बारे में जो यहाँ पे ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है, वो मैं आपको हाईलाइट करके थोड़ी सी पढ़ के बताता हूँ। तो केस का मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर एक पहले फर्स्ट डे ऑफ कोर्ट जो इसका रॉजर थर्सबी का है, 2 दिन पहले वो बैरिस्टर बना है, तो उसके बारे में ये सीन बीच में सेट है नावल के अंदर के उसका सीनियर उसको बहस करते करते एक और जगह पे उसका केस कॉल होता है, तो वो कहता है कि इसको पकड़ा के फाइल चला जाता है कि यार बाकी तुम कर लेना बीच में, इसमें कोई इतना ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं। उसके बारे में लिखा हुआ कि इसके क्या तासुरात होते हैं, जो बैरिस्टर साहब 2 दिन की स्टैंडिंग के साथ वहाँ पे जज के सामने खड़े। It had all happened in so quickly that Roger was having difficulty in realizing that he, Roger Thursby Esquire, barrister at law, aged 21, called to the bar 2 days previously, had been left in court to represent one side or the other. He did not know which, in a building dispute before a judge called an official referee of whom he had vaguely heard. He looked round in court. There was not a face he knew. Something inside his head began to go round and round, and the official referee's face started to approach him with alarming swiftness. He realized he must pull himself together or faint. Sir Hugo addressed him. Now that the wind has dropped, Mr. Truefold, would you continue your learned leader's submission? Roger wished he had fainted. He rose unsteadily and looked blankly in front of him. Your learned leader was saying, went on Sir Hugo, who, without intending to be unkind, enjoyed this sort of scene immensely. Let me see, what was he saying? Something about malt, I believe, strange in a building dispute. Ah, no, I remember. He was submitting that the onus was on the other side. No doubt you would like to elaborate on the submission.
Roger continued to look blankly in front of him. It was not that the power of speech had left him, but he simply did not know what to say. He had sufficient presence of mind to realize that if he started "Your Honor" and then paused, the official referee would, after waiting a decent interval, say, "Yes, Mr. Truefold," and उसका नाम थर्सबी है वैसे, and हर दफ़ा उसका नाम गलत वो बोलता है जज, and then he would either have to repeat "Your Honor" or lapse into silence again. It was not better to. It was better not to break it at all, unless and until he could think of one sentence which meant something. The only sentence he would think of was "I want to go home," and that wouldn't do at all. It flashed through his mind that he could pretend to faint, and he cursed himself for having resisted a moment before the genuine impulse to do so. But he had a natural inclination to tell the truth. This was something embarrassing in his relations with Sally and Joy, but they were a long way from his mind in this particular moment. He remained standing and staring and thinking of for the thoughts which would not come. "Come, Mr. Trueband," said Sir Hugo affably. "It's quite calm now. Shall we proceed?" There was nothing for it. "Your Honor," he began, and then came to the inevitable pause. Sir Hugo looked inquiringly at him, and so did the counsel of the other side, and indeed everyone in the court. The pause had already passed the stage at which it became unbearable when Sir Hugo duly came in with the expected "Yes, Mr. Twofold," to which Roger replied the only words he had so far learned, "Your Honor." And again there was a terrible pause. Eventually Sir Hugo broke it with, "I suppose you want to say that the defendants, having admitted that the work was done, that it was not being paid for, it was for them to show that the parts of it have not been properly done." With relief he could not conceal, Roger added a word from his repertoire. "Yes, Your Honor," he said, and getting bolder, "I do." "Then, Your Honor," he added in a case of the emphasis sounded rude. "An admirable submission, Mr. Truelove," said Sir Hugo, and a very succinctly put one. But, and he paused, frowned for a moment, but he went on. "Isn't it for the plaintiff in the first instance to give evidence that he has performed his contract, and can he do so without showing that the work was properly done?" Roger's boldness vanished. The only truthful answer he could make would have been, "I don't know," but that wouldn't do. So he adopted the first line of defense of standing and staring and keeping a "Your Honor" in reserve if necessary. "You can't very well rely," went on Sir Hugo, "on the maxim omnia right, etc. Incidentally, I never can remember exactly how it goes. Omnia right ac solemniter sam premas samputero," said Roger, thanking his patron saint for making him learn the legal maxim for his bar examination. "Thank you, Mr. Treadgold," said Sir Hugo. "Thank you very much, but you can't rely on that maxim in a case such as the present one, can you?" It goes on for a bit, or absolutely brilliant, or really really funny, or really बहुत मज़े का है. बट एक सिंह कहाँ पे कौन सी वाली किताब की, उसका कवर भी आपको दिखा देता हूँ. ब्रदर्स इन लॉ जो है, खैर इसका तो कवर ये है, ब्रीफ टेल्स फ्रॉम द बेंच. ये जेड लाइब्रेरी की फ़ाइल है. और हाँ, ये वाली ब्रदर्स इन लॉ, इट्स रियली रियली नाइस. ये किताब आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अगर आप डाउनलोड कर लें या बाज़ार में से अगर मिल जाए आपको. वैसे ये कबाड़ियों के पास अमूमन मिल जाती है यूज़. हेनरी सेसिल की किताबें काफ़ी कॉमन थी एक ज़माने में. सो इसको आई रेकमेंड, ये किताबें पढ़ें. और पढ़ेंगे तो आपको अगर वकालत में इंटरेस्ट है तो वकालत का शौक़ होगा, एंड यू कैन रीड. और वैसे भी थोड़ी बहुत फ़नी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी जब पहली दफ़ा एक सीनियर ने कि इसको कहते हैं सैयद अली ज़फ़र साहब ने खड़ा कर दिया कोर्ट के सामने कि जी मैं दूसरी कोर्ट में, या मुंशी ने, हम मुंशी की रिलेशंस के बारे में, ऐसे ताल्लुकात वगैरह के बारे में, वो कितना पावरफुल होता है, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि मुंशी की आपको धकेल के आगे कर देता है. यार ये कह देना जज को आपके साथ और गुफ्तगू वगैरह अगर करना शुरू कर दे. कहने को तो ये बड़ा आसान है कि जी यंगस्टर्स को तैयारी होनी चाहिए करने के लिए, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी काफ़ी चाहिए होती है. खैर, हेनरी सेसिल के नावल ज़रूर पढ़िए, मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ. आई थिंक यू विल एंजॉय देम. हैव अ नाइस संडे और इंशाल्लाह आप रहती. थैंक यू.